Welcome class 11th. After completing motion in a straight line, we are going to start a new topic, that is motion in a plane. And this topic is especially related to vector analysis, because without vector analysis we cannot discover this chapter, motion in plane. As for example, if we are taking a motion which is held in an xy plane, so we have to define the coordinate, that is x comma y. This is coordinate system, but to replace coordinate system we need vectors which will give the direction in which the body is moving, the force is applied. So all these cases will be studied with the help of only and only what? Vector analysis. So what are vectors? Vector quantities. So vector are those physical quantities which have both magnitude as well as direction. For example, displacement, velocity, momentum, force, acceleration, etc. How a vector is represented? How we can represent a vector? So there are two methods. First is analytical method and other is graphical method. Analytically, we represent the vector by a letter with arrow on its head. This is analytical representation. एक लेटर ड्रॉ करिए, एक लेटर राइट करिए और उसके हेड पे एक एरो बनाइए. ये बताएगा कि ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. एंड graphically how we can represent? We have to draw the arrow having the same length. Like if A is equal to 2 meter, then this arrow must have a length of 2 meter, representing the direction of this vector. इस एरो का मैग्नीट्यूड उस क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए लेंथ, और डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिसमें इस क्वांटिटी को बताया गया है. This is graphical treatment and this is analytical treatment of representation of a vector. Now, what are the types of vector? We are having different types of vectors. So one by one I will discuss the different types of vectors. So first one is fixed or localized vector. First one is fixed or localized vector. Localized vector. So if the initial point of a vector is fixed, it is called fixed vector. If the initial point, like this is fixed, this cannot be changed. If we are applying the force on the handle of a machine, then the handle is fixed, so always we have to apply the force on the handle. So the force applied there is what type of? That is fixed vector. Next one is free or non-localized vector. Free or non-localized vector. Free or non-localized vector. When the initial point is not fixed, then it is known as free or non-localized vector. Next one is equal vector. What are equal vectors? What are equal vectors? So if we draw two vectors graphically, vector A and vector B, this is vector A and this is vector B. If both the vectors have their magnitude as same as well as the direction is also same, see, the magnitude must be same. If this is of 2 meter, then this must be of 2 meter, and their direction must be same, like NESW. So both vectors are facing eastward, so therefore vector A is equal to vector B. Next is negative vector. Negative vector. When the vectors are equal in magnitude but its direction is opposite. Vector A is facing eastwards and vector B is facing westwards, but their direction are same, so we can say it as
negative vector and we have to represent as vector A is equal to minus of vector B, and this negative sign represent that vector B is in opposite direction to A. Next is scalar multiple of vector. What do you mean by scalar multiple? Scalar multiple means when we multiply a scalar number like vector A is equal to 5, scalar multiple. Vector A is equal to 5, so NA is equal to n times of 5. Just multiply the number with that scalar quantity. Next one is collinear vector. Collinear vectors are those vectors which either act along the same line or along parallel lines, like vector A, vector B. This is collinear because both are acting in same line, both are acting in eastward. It is not necessary their magnitude must be equal. This is also a collinear vector because both are acting in the same line or same direction. Okay, so these are set of collinear vector. Now most important one, three vectors which we have to deal with in +1 and +2, that is 11th and 12th: unit vector, position vector and displacement vector. So what is unit vector? Like if a quantity is written as vector A, it have two parts, magnitude and डायरेक्शन. लेकिन इस एरो से हम नहीं पता कर पाएंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसको दो पार्ट में लिखना पड़ेगा. इसके दो पार्ट होंगे. एक पार्ट होगा मैग्नीट्यूड का कि उस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, और दूसरा पार्ट होगा डायरेक्शन का. तो मैग्नीट्यूड तो सिंपली हम लिख देंगे ए बिना एरो के, तो ये क्या बता देगा कि उसका क्या है मैग्नीट्यूड, या मॉड लगा दें उसके सामने. ये मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका है. और डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे? तो डायरेक्शन को बताने के लिए हमें एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसकी वैल्यू 1 होगी और डायरेक्शन सेम होगी किसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ए होगा. तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से. इस ऊपर जो ये सिंबल है इसके 3 नाम आपको अलग अलग बुक्स में मिलेंगे. कहीं कैप लिखा हुआ मिलेगा, समटाइम्स इट इज़ नोन एज हैट and sometimes it is known as carrot. तीनों नाम एक ही हैं, ए कैप, ए हैट और ए कैरेट. दिस इज द डायरेक्शन. सो वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मॉड ए कैप. तो देखिए ये ए कैप की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ ए कैप इज व्हाट 1. ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर के जो ए है उसका वैल्यू 1 होगा, इसलिए उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. लेट अस कंसिडर अ पॉइंट पी. एक पॉइंट पी एज्यूम कर लेते हैं या P1 एज्यूम कर लेते हैं. इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्स और वाई लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट. लेकिन अगर वेक्टर एनालिसिस करना हो और इसकी पोजीशन बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे? तो पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट. हमेशा हम रेफरेंस पॉइंट मतलब ऑब्जर्वर कहाँ होगा जो उस पॉइंट P1 को देख रहा होगा वो ओरिजिन पे होगा, और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें. दिस लाइन, दिस इज नोन एज वेक्टर OP और R1 एज पोजीशन वेक्टर. Vector R1 is what? Position vector. फिर से समझ लेंगे, ओरिजिन से किसी पोजीशन को या पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी दोनों पॉइंट्स को ओरिजिन से उस पॉइंट तक, दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. दूसरा पॉइंट एक एज्यूम कर लें P2, तो ये किसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, P2 पॉइंट का, क्योंकि ओरिजिन से उस पॉइंट तक ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया था? द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन. So the P1 P2 vector is known as position vector of R1 is position vector of point P1, R2 is position vector of P2 and P1 P2 is what? इसके ऊपर वेक्टर लगा लेंगे डिस्प्लेसमेंट vector. So these are types of vector. In next lecture we will deal with algebra of vectors. Thank you class.